Hello friends, welcome back to the series of lectures. This is the 40th lecture of this series of CPC. In this lecture we would start with Order 6, pleadings generally, and we would read from Rule 1 till 16, and in this I will not dictate anything. I will read and explain. कोई एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा तो मैं नोट डाउन करा दूंगा, अदरवाइज यू कीप ऑन जॉटिंग डाउन. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आपका ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 हो जाएगा. ऑर्डर 7 में द मेन पार्ट्स आई हैव डन एंड द रिमेनिंग रूल्स यू हैव टू डन योरसेल्फ. देन देयर आफ्टर आई हैविंग I will shift to order 8 after completing this. Now read it one by one. Rule 1. Pleading shall mean plaint or written statement. Pleading shall mean plaint or written statement. Now they are saying pleading shall mean the plaint or the written statement. Now you must have to understand कि plaint और written statement के साथ और भी बहुत सारी चीज होती है जो कि इसमें आएंगी. फॉर एग्जाम्पल रिटन स्टेटमेंट के अलावा कई बार आप एडिशनल रिटन स्टेटमेंट भी फाइल करते हो. अपार्ट फ्रॉम द रिटन स्टेटमेंट यू ऑल्सो फाइल एडिशनल रिटन स्टेटमेंट, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लीडिंग. रिटन स्टेटमेंट के बाद द प्लेंटिफ में फाइल रेप्लिकेशन. आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, द प्लेंटिफ में फाइल द रेप्लिकेशन. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लीडिंग. ये सब प्लेंट का ही पार्ट माना जाएगा. एंड सिमिलरली जब आप रेप्लिकेशन फाइल करोगे, देन फ्रॉम हियर द डिफेंडेंट may file the rejoinder in reply to your replication. So that is also the part of pleadings. So plaint, written statement, additional written statement, replication, rejoinder, all these will be considered to be a part of the pleadings. और उसी तरीके से a party may apply for amendment of pleadings. तो amendment of pleadings में जो pleadings वो amend करता है, that also becomes the part of pleadings. So whatever pleadings he amends through the amendment of pleadings, that also becomes the part of the pleadings. So these are the various aspects of the pleadings. So it is not simply the plaint and WS. So all these elements also will be called the part of the pleadings. ठीक, the amendment of pleadings करके जो आप pleadings को amend करते हो या change करते हो, that will also be part of pleadings. अब देखो amendment of pleadings में एक point और लिख लो, आप उसको ऐड कर लीजिएगा उसमें. the point is कि amendment of pleadings में the appeal is not allowed but the revision is allowed. Against an order of amendment of pleadings, an appeal is not allowed but revision is allowed. Take. So hope you have understood. In pleadings, first of all the plaintiff will file the plaint, then thereafter the defendant will file the written statement, then in reply to the written statement the plaintiff will file a replication, then in reply to the replication the defendant may file the rejoinder. ठीक, तो ये चारों तो pleadings में आएंगे ही आएंगे. अब plaintiff after filing the written statement may file a additional written statement. Now this additional written statement also a part of the pleadings. And similarly either the plaintiff or defendant may make an application of Order 6 Rule 17 for amendment of pleadings. So the changes he bring about for the amendment of pleadings, that will also be called the part of the pleadings. ठीक, तो कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेंगे what do you understand by pleadings, what do you mean by pleadings. So pleadings are basically the statement made by either of the parties. तो इसको आप लिख लो चाहो तो, write down. Pleadings are the statement made by either of the parties to the suit
through which the party presents his case before the court. Now it can be the plaintiff or the defendant. It can be the plaintiff or the defendant. Defendant will take the defense through its pleadings, and plaintiff will attack upon the defendant through its pleading. ठीक, फिर उसके बाद आप ये सब बताओगे. ठीक, अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू द प्लीडिंग्स, तो उसके लिए तो द रूल्स आर देयर विच वी रीड, तो उसको आप समराइज कर लो एंड दैट यू हैव टू राइट इनटू द एग्जाम. नाउ सी द सेकंड रूल. नाउ सेकंड रूल, every pleading shall contain and contain only. Every pleading shall contain and contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. But not the evidence by which they are to be proved. ठीक, तो अब now they are giving the rules of pleading कि आपको pleadings करते समय what all things you have to take care of. तो ये चीज़ आपको समराइज करके लिखना पड़ेगा, और जब भी आप plaint या written statement ड्राफ्ट करते हो then you have to follow the rules. So these are the direct rules which has to be followed while making the plaint or the WS. So every pleading shall contain and contain only a statement in a concise form, means you have to brief, of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, in a concise form of the material fact. Now the material facts means what? Now it will be the matter in issue, matters in issue, it will be the cause of action. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मैटर इन इशू, कॉज ऑफ एक्शन, तो वही आप प्लीडिंग में क्लेम करोगे, एंड दैट टू बी इन अ कंसाइज फॉर्म. फॉर एग्जांपल आई हैव टू स्टेट, सपोज आई एम प्लेंटिफ एंड आई हैव टू स्टेट दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स दैट देयर वाज the plaintiff and the defendant has entered into a contract for so and so subject matter on so and so date and to be performed on so and so date. ठीक, तो ये मैंने स्टेट किया, तो दैट इज अ कंसाइज स्टेटमेंट. अब मान लो मैं उसमें ये लिखने लग जाऊँ दैट द प्लेंटिफ केम टू माई हाउस, या द डिफेंडेंट केम टू द प्लेंटिफ्स हाउस and he had the dinner, and then they both sat together and they negotiated, and next morning they again negotiated, and finally they entered into a contract on so and so date. अब यहाँ पर that thing, the negotiations, that is not required. Now that can be a part of evidence, but that cannot be a part of pleadings. Pleadings में आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना पड़ता है, बिकॉज द कोर्ट हैज टू फ्रेम द इशूज. हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लीडिंग्स के बेसिस पे द कोर्ट विल फ्रेम इशूज. तो जितना कंसाइज और टू द पॉइंट आपका प्लीडिंग होगा उतना ही इट विल इजी टू द कोर्ट टू सेटल द इशूज. तो जितना कंसाइज और टू द पॉइंट आपका प्लीडिंग होगा उतना ही इट विल इजी टू द कोर्ट टू सेटल द इशूज. So therefore you will not confuse the court by writing unnecessary facts, and therefore the pleading should be very concise and it should be the brief statement of the material fact. If you read it again, every pleading shall contain and contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. But not the evidence by which they are to be proved. ठीक, तो आप जो एविडेंशियरी फैक्ट है वो नहीं बताओगे. अब उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल को मानो आप, दैट द
plaintiff and defendant entered into a contract on so and so date. That is what you state. अब उसको प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंसेस हैं. Suppose you have a document for that. Suppose you have got a document of the contract. तो आप उसमें इतना मेंशन कर सकते हो that the document of which herewith annexed herewith. तो आप इतना बस मेंशन कर दो say that the document of contract is annexed herewith. अब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स और प्लीडिंग्स आप नहीं लिखोगे. सपोज यू हैव गॉट नो डॉक्यूमेंट्स, दैट इज एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन नॉट मेंशन द फैक्ट्स ऑफ द विटनेसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द एविडेंशियरी थिंग हैज टू बी प्रूव्ड. Evidentiary thing has to be proved in the court at the trial stage, and that is not to be stated here in the pleading. That is not to be stated here in the pleadings. Take. Now next, every pleading shall, when necessary, be divided into paragraphs. Every pleading shall, when necessary, be divided into paragraphs, numbered consecutively, each allegations being so far as convenient contained in a separate paragraph. Every pleading shall, when necessary, be divided into paragraphs, numbered consecutively, each allegation being so far as is convenient contained in a separate paragraph. Dates, sums and numbers shall be expressed in a pleading in figures as well as in words. ठीक, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है. नॉर्मली जब आप ड्राफ्टिंग सीखोगे तो यू विल नॉट राइट द सम्स, डेट्स, नंबर्स इन फिगर्स ओनली, बट इट इज ऑल्सो बी रिटन इन वर्ड्स ऑल्सो, एक्सप्रेस्ड इन प्लीडिंग्स इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स. अब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इन वर्ड्स तो आप उसको आंसर में इन फिगर्स में भी लिखिएगा और वर्ड्स में भी लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल इट इज केम इन अ क्वेश्चन दैट 9th of September 2022, तो आप उसको फिगर्स में भी लिखना 990909 2022, और आप वर्ड्स में भी लिखोगे 9th of September 2022, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है it should be mentioned in both figures as well as in words, and the examiner will always looking for कि ड्राफ्टिंग आपने इसको पढ़कर किया है कि नहीं. So whatever guidelines are there in this, that you have to follow. ठीक, so I am reading it again. Dates, sums and numbers shall be expressed in pleadings in figures as well as in words. And then further the forms in Appendix A, when applicable and where they are not applicable, forms of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings. ठीक, तो आप पीछे जो लास्ट में अपेंडिक्स ए देखोगे तो उसमें different kinds of plaints and different statement has been provided. तो अलग अलग तरह के सूट के लिए WS और प्लेंट लिख रखा उन्होंने. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड सम फॉर्मेट्स टू यू. और फॉर मोर you can follow there is a book by Ganguly for the format of WS and plaint. Then in a commercial dispute where forms of pleadings have been prescribed under the High Court rules or practice directions made for the purposes of such commercial disputes, pleadings shall be in such form. So in commercial disputes, the pleadings in the form of the directions given by the High Court or practice going on. Then in all cases in which the party pleadings relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such
as are exemplified in the forms aforesaid. Particulars with dates and items, if necessary, shall be stated in the pleading. So, in all cases in which the party pleadings relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and items, if necessary, shall be stated in the pleadings. Shall be stated in the pleading. Now what they are saying is, जैसा I will tell you, जैसा A and B had entered into a contract. A and B had entered into a contract. A and B entered into a contract. अब सपोज B ने A के साथ फ्रॉड किया था. अब A files a suit against B for avoiding the contract. If you have read contract, it is a voidable contract. So A can always file a suit against B. You can always file a suit against B to have a declaration the contract is voidable and it can be avoided. तो अब A ने जब सूट किया B के ऊपर to avoid the contract और उसका ग्राउंड है that there was a contract entered into between the plaintiff and the defendant on so and so date, but B, the defendant, has committed a fraud upon the plaintiff A, and you may explain the fraud in very brief. फ्रॉड का डिटेल्स आप यहाँ नहीं लिखोगे. तो इन वेरी ब्रीफ यू विल टॉक अबाउट द फ्रॉड एंड टाइम बताओगे किस डेट को कितने बजे उसने ये किया था, एंड अकॉर्डिंगली यू विल क्लेम द अवॉइडेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक. अब क्योंकि आपका प्लेन फ्रॉड के बेसिस पर है, सो यू शुड ऑलवेज राइट इन द प्लीडिंग दैट यू आर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द फ्रॉड कमिटेड बाय डिफेंडेंट. अब सपोज उल्टा कर लो इसको. अब सपोज इन दिस केस, suppose A has committed a fraud upon B and done a contract. अब A does not perform the contract. अब B ने A पर सूट किया for damages for breach of contract. B ने A पर सूट किया for the damages of breach of contract. अब A as a defendant in a written statement, he declares that the contract was voidable. The plaintiff has committed the fraud upon him, and hence he is not liable to perform the contract. ठीक. तो B ने फ्रॉड किया इस पर A पर, B ने ही क्या कर दिया, सूट किया. तो A ने अपने रिटन स्टेटमेंट में दिया, A इधर डिफेंडेंट हो गया, तो A ने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा he is not liable to perform the contract because B has committed a fraud upon him. The plaintiff has committed a fraud upon him, so he is not liable to perform the contract and he is not liable to pay the damages. अब यहाँ पर the defendant is claiming the contract to be voidable. On what ground? Fraud, misrepresentation, undue influence, whatever. So he must state that ground as to the fraud was committed by the अपोजिट पार्टी. ठीक. अब फ्रॉड का डिटेल्स आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, बट यस यू विल मेंशन इन वेरी ब्रीफ एज टू व्हेन एंड व्हाट काइंड फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट यू. As to when and what kind of fraud he has committed against you. You have to brief it in you have to mention it in very brief. So that is what they are saying. कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर है जो कि आपको अलग से पता है और जिसकी वजह से आप अपनी लायबिलिटी अवॉइड कर सकते हो या जिसकी वजह से दूसरी पार्टी पर लायबिलिटी इम्पोज कर सकते हो, मेंशन. ठीक. So in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence,
and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in forms aforesaid. So what they are saying is, जो अपेंडिक्स ए में फॉर्म्स हैं उसमें शायद ये वाले टर्म्स ना लिखे हों बिकॉज दे आर जनरल काइंड ऑफ फॉर्म्स, लेकिन आपको अगर लगता है कि आप अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड वगैरह एक्सेट्रा क्लेम कर सकते हो, सो देन यू मस्ट स्टेट दीज फैक्ट्स. सो इवन इफ in the forms in appendix A these words are not used, but if you find that you can use these words, then you must use these words. ठीक. Then further you see rule 6. Rule 6, that is condition precedent. Now if you have studied contract, you know the words condition precedent and the condition subsequent. Condition precedent and condition subsequent. अब यहाँ पर they are not talking about condition subsequent, they are talking about condition precedent. What is the difference between two? अब देखो condition subsequent का एक एग्जाम्पल contingent contract है. It is good example of condition subsequent. अब condition precedent में क्या होता है कि a person perform his condition and the contract is final. अब condition subsequent में क्या होता है, the person entered into a contract, then the condition came, and for which the contingent contract is a good example. In this, the person entered into a contract, and subsequently if that will happen, then the contract will become void. If you remember, if you have read contingent contract, तो condition subsequent basically is contract होने के बाद. contract पहले हो गया, contract agree हो गया, उसके बाद वो condition, लेकिन उस condition के होने से the contract will become void. ठीक. So this contingent contract is a very good example of condition subsequent. Now they are talking about the condition precedent here. Condition precedent is basically that putting off some condition, that if you do this, then the contract will become final. तो अगर आप ये condition fulfill नहीं करोगे तो contract enforceable नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया, मानो किसी मकान का एग्रीमेंट हुआ कि मैं ये मकान आपको बेचूंगा. ठीक. अब आपने कंडीशन लगाया एग्रीमेंट में ये तुम इस मकान को वाइट वॉश या पेंट करके दोगे तभी मैं इस मकान को खरीदूंगा. ठीक. सो द गेटिंग द हाउस पेंटेड इज द कंडीशन प्रेसिडेंट. ठीक. For example, say take another example. Suppose a property is not freehold. Me and you entered into a contract. Me and you agreed that I promised you that I will sell the house to you, and you will paying the consideration. But the condition precedent is that the house will given to you freehold, means that you will purchase the house from me only if I get this house freehold from loan etc. तो ये एक कंडीशन है कि जब तक मैं इस मकान को फ्री होल्ड नहीं करवाऊंगा तब तक आप ये मकान मुझसे नहीं खरीदोगे. अब if I do not fulfill the condition, then the agreement is not enforceable. It is not contract, you will say the agreement is not enforceable. So the condition precedent is basically that condition upon which the enforceability attained in the transaction. तो इसको आप लिख लें. Right. Condition precedent is that condition upon which transaction attains enforceability. ठीक.
Now look the rule, read it. Any condition precedent, the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or the defendant, as the case may be, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading. Any condition precedent, the performance or occurrence of which is intended to be contested, performance of or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading. Any condition precedent, the performance or occurrence of which is intended to be contested. अब मान लो मैं ये कंटेस्ट करना चाहता हूँ कि that there was a condition precedent और अपोजिट पार्टी ने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है. There was a condition precedent between both of us and you have not fulfilled the condition. I want to allege that you have not fulfilled the condition precedent and therefore I am not liable to perform my obligation. ठीक, so that is my contention. ठीक, तो फिर ये बात मुझे प्लीडिंग में लिखना पड़ेगा. अगर मैंने कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया प्लीडिंग में, then it will be deemed that as if the condition precedent has been fulfilled. तो वही ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मेरे और आपके बीच, जैसे वो एग्जाम्पल देखा था हमने फ्री होल्ड वाला, जिसमें कि मुझे प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करवा कर देना है तभी आप प्रॉपर्टी को खरीदोगे. ठीक, अब मैंने फ्री होल्ड करा दिया और आपने मेरा मकान नहीं खरीदा, तो बाद में मैंने आपके ऊपर सूट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट किया कि आपने मेरा मकान नहीं खरीदा. अब वहाँ पर आई डिक्लेयर दैट सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट वाज देयर एंड डिफेंडेंट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. Now I am not talking about the condition precedent. Means what? On my part, impliedly the condition precedent has been fulfilled. ठीक, तो अगर मैं कंडीशन प्रेसिडेंट की चर्चा नहीं करता हूँ प्लीडिंग में, तो मतलब इट इज इम्प्लाइड कि मेरी तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंडीशन प्रेसिडेंट हैज बीन फुलफिल्ड. अब यू फाइल्ड अ रिटन स्टेटमेंट and in the written statement you do not talk about the condition precedent. आपने condition precedent के लिए कुछ नहीं लिखा. Means on your part also it is implied that you are pleading that the condition precedent has been fulfilled. But if you want to say that the condition has not been fulfilled and therefore I not perform the contract, then you must expressly declare that the condition precedent has not been fulfilled. You must expressly declare that the condition precedent has not been fulfilled. So that is what they are saying. आप पढ़ो इसको ध्यान से. Any condition precedent, आप पढ़ो इसको दोबारा ध्यान से. Any condition precedent, the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or the defendant, as the case may be, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading. Means if you do not raise the pleading of the condition precedent, then it is implied that the condition precedent has been fulfilled. So if you want to contest that the condition precedent has not been fulfilled, then you must raise that in your pleading. ठीक, तो इसको आप लिख लो. right, a condition precedent, right, a condition precedent has to be expressly
raised in the pleading. If the party wants to contest that the condition has not been fulfilled, a condition precedent has to be expressly raised in the pleading. If the party wants to contest that the condition has not been fulfilled, and if he does not plead that, then it shall be implied that the party is admitting that the condition precedent has been fulfilled. ठीक, अब नेक्स्ट आप देखिए रूल 7, रूल 8. No pleading shall except by way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same. तो इधर ये बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेट कर रहे हैं कि एक बार जब तुमने प्लीडिंग कर दिया अपना ओरिजिनल, और बाद में अगर तुम कोई और ग्राउंड क्लेम करना चाहते हो या कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो, तो फिर आपको उसके लिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना पड़ेगा, और बिना कोर्ट के परमिशन के आप नया ग्राउंड या नया फैक्ट ऐड नहीं कर सकते. No pleading shall except by way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same. So basically, if a party has made the pleading already, and now if you want to add something to it or change something in it, then you will go for the amendment of pleading. So that is one thing. Now can you raise something which is inconsistent to your earlier pleading? If you raise something inconsistent to your earlier pleading, then also you have to take the permission of the court. By amendment of pleadings. लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, those pleading which are the destructive of the earlier pleading, वैसे प्लीडिंग आप रेज नहीं कर सकते. इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग, दैट यू कैन नॉट रेज. यू कैन रेज ओनली दोज प्लीडिंग्स विच ऐड और विच सब्स्टिट्यूट द अर्लियर प्लीडिंग एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द अर्लियर प्लीडिंग. सो इफ दे आर इनकंसिस्टेंट बट टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव of the other pleading, to the extent of the destructive of the other pleading, then such an amendment will not be allowed. So inconsistency here should not be to the extent of destroying the earlier pleadings. तो इसको भी लिख लो आप, write down. Right, any pleading which is to be added subsequent to the original pleadings shall be added only with the permission of the court. By amendment of pleadings. However, the pleading to be added, if inconsistent with the earlier pleadings, shall not be so inconsistent that it is mutually destructive of the earlier pleadings. ठीक, तो mutually destructive नहीं होना चाहिए. Next rule, where a contract is alleged in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of fact from which the same may be implied, and not as denial of the legality or sufficiency in law of such contract. Now what does this mean? So suppose me and you enter into a contract. I commit a breach of contract. Have you filed your plaint in which you are pleading that there was a contract between the plaintiff and the defendant? Now in my reply, what I am claiming is that there was no contract. मैंने जवाब ये दिया कि that there was no contract. और जब मैं कहता हूँ कि that there was no contract means what?
कि मैं उस फैक्ट को मना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ठीक, अब मान लो आप किसी तरीके से प्रूव कर देते हो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मान लो प्लेंटिफ प्रूव कर देता है कि दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा जो प्लीडिंग था पहले का कि दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यू आर सेड दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम कंटेंडिंग दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन आई एम सेइंग दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हाट? That I am suggesting that I never entered into a contract with you. अब you on the basis of document or somehow you prove that there was a contract, so my denial of the contract was defeated. Now I turn back and now I want to say that no, when I said that there was no contract, I mean that the contract was there but it was frustrated. So I say that when I said that there was no contract, I mean that contract was there but it had got frustrated. तो ये pleading implied नहीं माना जाएगा। तो जब मैं कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। क्योंकि अगर मुझे वैसा कहना था या इफ आई मीन दैट, देन मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए था। मुझे एडमिट करना चाहिए था दैट यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू सो एंड सो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी द कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देयरफॉर इट इज void. अगर if I am claiming the frustration of contract या voidability of contract, then I must plead that in my pleadings. So merely claiming that there was no contract does not imply that I am challenging the legality of contract. अगर legality of contract challenge करना है तो आपको वो expressly बताना पड़ेगा। तो फिर से देख लो आप इस पे एक बार। Where a contract is alleged in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of fact from which the same may be implied. अब contract implied हो या express हो, when I am saying that there was no contract, then I am denying the existence of the contract. Means that I never entered into a contract, express or implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract. तो मतलब जब मैं कहता हूँ कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैं उसमें ये इम्प्लाई नहीं कर रहा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन इलीगल है, ठीक, या फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। अब अगर आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट मेरे खिलाफ प्रूव कर देते हो और अब मैं ये अगर मैं ये कहना चाहता हूँ अब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो गया था कॉन्ट्रैक्ट का, इट हैज बिकम वॉइड, तो मुझे अमेंडमेंट करके ये प्लीडिंग डालना पड़ेगा। एंड आई कैन नॉट से that when I said that there was no contract, then this pleading is implied in that. So I have to amend. So I will have to amend, and I will have to put that pleading if the court permits me to amend the pleadings. ठीक, तो इसको भी लिख लीजिए आप। Right. A denial of the existence of the contract simply means that the defendant is contesting that there was no contract entered into with the plaintiff. Such denial does not imply the contest upon the legality of the contract. Such denial does not imply the contest upon the legality of the contract. आगे लिखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राइट।
If the plaintiff proves that there was a contract, then from the earlier denial of the defendant, it cannot be inferred that the contract had got frustrated or otherwise. Then from the earlier denial of the defendant, it cannot be inferred that the contract had got frustrated or otherwise. It is illegal or otherwise it is illegal. If the defendant now wants to contest such a fact, then he will have to amend the pleadings. If the defendant now wants to contest such a fact, then he will have to amend the pleadings. ठीक, अब 9th rule पे चलिए. Whenever the contents of any document or material, it shall be sufficient in any pleading to state the fact thereof as briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material. अब जैसे मान लीजिए there was a written contract. अब आप लिखते हो that there was a contract between the plaintiff and the defendant in such and such manner. अब उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है आपका, डॉक्यूमेंट के जो डिटेल्स है उसका प्लीडिंग तो नहीं लिखोगे आप. यू सिंपली मेंशन दैट सो एंड सो डॉक्यूमेंट हैज अनेक्स्ड हियर विद, और उस पर ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना. मान लो डिफेंडेंट कहता है दैट द प्लेंटिफ हैड कमिटेड अ फ्रॉड अपॉन मी, द प्लेंटिफ हैड रिटन अ लेटर टू मी ऑन सो एंड सो डेट. इन दैट लेटर ही हैज रिप्रेजेंटेड रॉन्ग फैक्ट्स टू मी. ठीक, मान लो डिफेंडेंट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल बिकॉज प्लेंटिफ ने मेरे ऊपर फ्रॉड किया था, एक लेटर लिखा था जिसमें उसने गलत फैक्ट्स मुझे बताए थे. अब आप अपनी प्लीडिंग्स में उस लेटर के डिटेल्स नहीं लिखोगे और आप सीधा इतना बताओगे दैट द प्लेंटिफ हैड रिटन सच एंड सच लेटर टू मी, दैट इज टू द डिफेंडेंट ऑन सो एंड सो डेट, in which he has represented wrong facts and that amounted the fraud upon the defendant. ठीक, अब क्या फैक्ट्स उसने लिखा था उसकी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लिखोगे द डॉक्यूमेंट इज अनेक्स्ड हियर विद, उस पर ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है. तो टेक एन एग्जांपल, मान लो डिफेंडेंट कहता है द प्लेंटिफ हैड कमिटेड अ फ्रॉड अपॉन मी, प्लेंटिफ हैड रिटन अ लेटर टू मी ऑन सो एंड सो डेट and in that letter he has represented wrong facts to me. ठीक, मान लो डिफेंडेंट कहता है कि the contract is voidable because plaintiff ने मेरे ऊपर फ्रॉड किया था. मान लो एक लेटर लिखा था जिसमें उसने गलत फैक्ट्स मुझे बताए थे. तो अब आप अपने प्लीडिंग्स में उस लेटर के डिटेल्स नहीं लिखोगे, आप सीधा इतना बताओगे that the plaintiff had written such letter to me, that is to the defendant, on so and so date, in which he has represented wrong facts and that amounted to the fraud upon the defendant. ठीक, अब क्या फैक्ट्स उसने लिखा था वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लेंटिफ ने मान लो किसी और का मकान बेचने के लिए डिफेंडेंट से एग्रीमेंट कर लिया और डिफेंडेंट को लगता है कि प्लेंटिफ का ही मकान है. न प्लेंटिफ ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि ये मकान मेरा है. अब डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग्स में उस लेटर की बात कर रहा है कि दैट ही हैज रिटन, प्लेंटिफ हैज रिटन अ लेटर इन विच ही हैज डिक्लेयर्ड दैट दिस हाउस इज हिज वेयर एज इट वॉज नॉट, दस ही हैज कमिटेड फ्रॉड. ठीक, तो अब उसमें बस ये वो इतना ही लिखेगा दैट द प्लेंटिफ थ्रू अ लेटर डेटेड सो एंड सो हैड डिक्लेयर्ड दैट ही इज द ओनर ऑफ द हाउस. तो इतना ही लिखोगे आप दैट ही इज द ओनर ऑफ द हाउस. बाय द लेटर ऑन डेटेड सो एंड सो ही डिक्लेयर्ड दैट ही इज द ओनर ऑफ द हाउस एंड दैट अमाउंट्स टू द फ्रॉड एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. तो इन दैट वेज आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हो, डॉक्यूमेंट की बात करते हो, तो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आप उस प्लीडिंग में नहीं लिखोगे बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस
You simply state that the document has been utiled, and at the most you will write about the net effect of the document. ठीक, रूल 10 देखिए, पहले एक और बार पढ़ लीजिए आप इसको 9 को. Wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material. So you have to write the name of the document. You have to mention the document actually, and details of the document is not necessary to write. Details of the document you not have to write. So next, rule 10. Wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. अब जैसे मान लो कहते हो कि that someone has committed a fraud against you. Suppose someone has committed a fraud against you. मान लो आपने malicious prosecution के लिए डिफेंडेंट के ऊपर सूट किया डैमेजेस क्लेम करने के लिए. You understand malicious prosecution. तो मान लो ए ने बी के ऊपर सूट किया है टू क्लेम डैमेजेस फॉर malicious prosecution. तो अब वो जो प्लीडिंग्स करेगा तो उसमें ही विल सिंपली स्टेट दैट द डिफेंडेंट ऑन सो एंड सो डेट गॉट द प्लेंटिफ क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड maliciously. ठीक, अब हाउ डिड यू इन्फर दैट मैलिस? दोज डिटेल्स आर मैटर ऑफ एविडेंस, सो दोज डिटेल्स आर नॉट टू बी रिटन हियर. अब मान लो प्लेंटिफ कहना चाहता है कि डिफेंडेंट से मेरा पहले झगड़ा हुआ था और डिफेंडेंट को मैंने डांटा था किसी बात पर, और इसलिए उसने मैलिशियसली मेरे ऊपर ये प्रोसिक्यूशन कर दिया. ठीक, अब ये जो कह रहे हैं कि पहले मेरा झगड़ा हुआ था तो उसकी वजह से उसके पास मैलिस था और उसकी वजह से उसने मुझ पर प्रोसिक्यूशन कर दिया. दिस इज द मैटर ऑफ एविडेंस. सो यू डिड नॉट हैव टू स्टेट दैट. सो यू सिंपली स्टेट that the defendant has maliciously prosecuted the plaintiff. Now how you inferred the malice, that is not the matter. That is not a matter to be stated in the pleadings. ठीक, तो इसमें I will simply plead. Suppose A went for the suit of malicious prosecution against B. तो उसमें A simply क्या लिखेगा? A simply plead that the defendant had maliciously prosecuted criminally the plaintiff without good faith. ठीक, यही तो लिखेंगे. अब वहाँ पर we did not need to write as to why he is malicious. अब अगर मैं उसमें लिखने लग जाऊँ कि on some day I the plaintiff has scolded the defendant on so and so reasons. उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो therefore I have scolded him and therefore he was malicious. So these details are not required in the pleadings. तो pleadings में आपको सिर्फ ये बताना है कि that he is malicious. अब malice कैसे इन्फॉर्म करोगे? That is matter of evidence. अब मान लो कोई और केस है, मान लो जिसमें नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का केस है, तो द डिफेंडेंट एक्टेड नेग्लिजेंटली एंड ही कॉज्ड द लॉस टू द प्लेंटिफ. अब हाउ यू आर इन्फरिंग द नेग्लिजेंस और नॉलेज और मैलिस, दोज थिंग्स आर नॉट टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस. ठीक, wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. Without setting out the circumstances from which the same is to be inferred.
तो सर्कमस्टेंसेस आपको नहीं बताना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material. मान लो जैसे talk about section 80 of the CPC. अब section 80 में if you file a suit against the government, it is required that before filing the plaint you should have given to the government officer concerned a notice of minimum 2 months, ठीक। तो कम से कम 2 महीने का मिनिमम नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक। अब जब आप सूट करोगे, प्लेंट फाइल करोगे, तो प्लेंट में आपको लिखना पड़ता है कि 2 महीने का नोटिस हमने सर्व कर दिया था, ठीक। अब नोटिस का डिटेल्ड फॉर्म आप नहीं लिखोगे, तो आप सिर्फ लिखोगे कि नोटिस हैज बीन सर्व्ड। Whether you actually served the notice means notice was sufficient etc or not, that is again a matter of style, ठीक। तो आपको नोटिस के डिटेल्स नहीं लिखना है कि कैसे सर्व किया, किसने सर्व किया, किसको सर्व किया, all these things you did not have to mention. You simply make a declaration that the notice required in section 80 of the CPC has been served, ठीक। So now see next rule 12. Rule 12. Whenever any contract or any relation between any persons is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact, and to refer generally to such letters, conversations or circumstances without setting them out in detail. And if in such case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relations than one as to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative, ठीक। अब ये बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा होगा तो उसमें कई एग्जांपल्स आते हैं, जैसे सीरीज ऑफ लेटर्स, जिसमें टुगेदर ऑल दीज लेटर्स विल कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज यू राइट ए लेटर इन विच यू मेक अ इन्विटेशन टू ए, फ्रॉम द अदर लेटर द अदर पार्टी मेक्स एन ऑफर, and then in some other letter you make some inquiry, and then maybe the offer is repeated, and then thereafter the acceptance is done. अब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है थ्रू लेटर्स और मे बी ईमेल्स व्हाटएवर, अब ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिटन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स थ्रू सेवरल लेटर्स। अब इन दैट केस the plaintiff, suppose he is alleging that there was a contract between the plaintiff and the defendant, so the plaintiff will make a declaration in the pleading itself that the contract was entered into through a series of correspondence and the copies whereof is annexed herewith. तो वो जो correspondence letters हैं उसकी कॉपीज अनेक्स्ट कर दिए हैं। अब इतना सफिशिएंट है लिखना। अब उसका डिटेल्स आपको नहीं लिखना है कि पहला लेटर मैंने लिखा था इनविटेशन, फिर उसके बाद उसने ऑफर दिया, फिर मैंने एक्सेप्ट किया। सो ऑल दोज डिटेल्स यू नीड नॉट हैव टू बी राइट, यू हैव टू सिंपली मेंशन द डॉक्यूमेंट एंड अटैच दैट इनटू द प्लेंट, एंड द समरी और द क्रक्स ऑफ ऑल दैट इज दैट देयर वाज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको उन लेटर्स की डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो व्हेन इफ यू रीड इट अगेन, whenever any contract or any relation between any persons is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances,
It shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and to refer generally to such letters, conversations or circumstances without setting them out in detail, and if in such case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relations than one has to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative. अब मान लो लेटर्स हैं, सारे लेटर्स मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं. यू विल से दैट देयर वाज वन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द लेटर्स. अब लेटर मिलके मान लो दो कॉन्ट्रैक्ट को बनाती हैं. देन यू विल मेंशन दैट देयर वाज टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट थ्रू द करस्पॉन्डेंस. अब ये यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं. Now you talk about, suppose wife claiming maintenance from husband. A wife claiming the maintenance from the husband under the Hindu Adoption and Maintenance Act, Section 18. तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर सूट किया है to claim the maintenance from him. अब the wife has to declare that I am the lawfully wedded wife. अब उसके पास lawfully wedded wife का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई शादी का ऐसा फोटोग्राफ भी नहीं है, और मान लो शादी का कार्ड भी नहीं है. अब उसके पास सम अदर एविडेंस है. मान लो उसमें से एक एविडेंस है दैट आई एम स्टेइंग विद हिम फॉर द लास्ट 20 years एंड शी हैज टू चिल्ड्रन ऑल्सो एंड दे आर लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग रिलेशनशिप. ठीक. अब अगर लॉन्ग कोहैबिटेशन लाइक हस्बैंड एंड वाइफ प्रूव हो जाए तो it will be inferred that they have got married. अब तो क्या उस वाइफ को अपना लॉफुल मैरिज बताने के लिए ये सारे सर्कमस्टेंसेस प्लीडिंग्स में डिटेल में लिखने पड़ेंगे, और या फिर क्या वो सिंपली ये बताएगी that I am his lawfully wedded wife and entitled to the maintenance and he is denying the maintenance. अब she will not go for telling the details. अब ट्रायल के समय तो she will have to prove कि I am lawfully wedded wife. Why? Because I am staying with him for so many years like a wife and I have 2 children from him, so it shall be inferred that I am a lawfully wedded wife. तो ये तो ट्रायल में बताएगी वो. सो दोज सर्कमस्टेंसेस शी नीड नॉट से इन द प्लीडिंग्स. ठीक. तो उस जो लिख रहे हैं ये सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं. सीरीज ऑफ लेटर्स और कन्वर्सेशंस और अदरवाइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस. तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अदरवाइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो सर्कमस्टेंसेस पे ये हस्बैंड वाइफ वाला एग्जाम्पल था. So it is not required to mention the circumstances detailed. So in this, from or otherwise from a number of circumstances. So it is not only a contract, but it can be any other relationship which can be proved through the circumstances. For example, एक बच्चे ने अपने फादर के ऊपर पैटर्निटी का सूट किया, पैटर्निटी के डिक्लेरेशन के लिए सूट किया, which declared that I am the legitimate son of this man. अब here the legitimate sonship can be proved through a set of circumstances. अब you need to specify the details of those circumstances in your pleadings. Now the answer is no. The pleadings has to be in brief and the evidentiary facts will not need to be stated. Evidentiary facts will always be proved at the stage of the trial. Rule 13. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor
or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. Unless the same has first been specifically denied. तो ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एविडेंस एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ की आपके फेवर में प्रिजम्पशन हो सकते हैं। अब जैसे कि आप 112 की बात कर लो, जैसे एग्जाम्पल लिया था अभी पैटर्निटी वाला, बच्चों ने पैटर्निटी के लिए सूट किया है फादर के खिलाफ, तो वहाँ पर 112 का प्रिजम्पशन हो सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ। तो शुड द चाइल्ड इन हिज प्लीडिंग ऑल्सो डिक्लेयर दैट देयर इज अ कंक्लूसिव प्रूफ इन हिज फेवर अंडर 112 सेक्शन 112? द आंसर इज नो। तो should the child in his pleading can also declare that there is a conclusive proof of section 112 evidence act in his favor? क्या इस तरीके की प्लीडिंग कर सकता है? The answer is no। तो प्रिजम्पशन की बात आप रेज नहीं करोगे, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी डिनाई करता है देन यू कैन टॉक अबाउट द प्रिजम्पशन। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे ने प्लेंट फाइल किया और फादर ने रिटन स्टेटमेंट डिनाई कर दिया दैट ही इज नॉट द फादर ऑफ हिम, अब जब रेप्लिकेशन आप फाइल करोगे तो वहां पर द प्लेंटिफ कैन टॉक अबाउट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट, लेकिन आप अपनी मर्जी से प्रिजम्पशन का पॉइंट रेज नहीं करोगे। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो इफ यू यूज द रूल ऑफ प्रिजम्पशन इन योर फेवर देन यू कैन नॉट यूज दैट because it is a matter of evidence. You cannot plead that presumption because it is a matter of evidence, and therefore that has to be taken care of at the stage of the trial. ट्रायल के समय आप orally कोर्ट के सामने आर्ग्यू करोगे that presumption is there in his case, but the pleadings is not required there to be written. But if the opposite party denies that right to you, then you can always raise the pleading of that presumption in your replication. ठीक? Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. तो अपोजिट पार्टी ने अगर डिनाई किया है तब आप प्रिजम्पशन और बर्डन ऑफ प्रूफ का पॉइंट रेज कर सकते हो इन योर प्लीडिंग। अदरवाइज neither you will talk about presumption in your pleading nor you talk about burden of proof. Let that court take care of that. ठीक, तो उसके बाद एग्जाम्पल है that is for bill of exchange. Consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. अब ये तो जब आप bill of exchange पढ़ोगे you will understand. Consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. अब मान लो there is a bill of exchange. There is a bill of exchange. For example, promissory note is a bill of exchange. अब there is a promissory note written by you in my favor. अब उसमें एक consideration मान लो 2 लाख, मान लो एक promissory note आपने साइन किया है that you will pay me 2 lakh rupees on so and so date. अब you did not pay that amount. You did not pay the amount and I want to claim the amount from you. अब जो सूट फाइल करूँगा मैं I will simply state that I have got a right to claim that 2 lakh rupees from you on the basis of the promissory note. अब मान लो मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट 2 लाख रुपए का है। अब आप कह रहे हो कि नहीं मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने 1 लाख रुपए का किया था। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर जब डिस्प्यूट 2 लाख रुपए का है, दो है कि एक है, अब there I will talking about practically about 2 lakh rupees. Otherwise I have to simply say that there was a bill of exchange signed by you and there was promise to pay 2 lakh which you refuse. But if the question is कि 2 लाख या 1 लाख,
Then I distinctly talk about the consideration that the defendant had signed a promissory note stating that he will pay 2 lakh rupees to the plaintiff on so and so date, and now on the date he refuses to give 2 lakh rupees. Instead, he is alleging that it is only 1 lakh rupees. A controversy of consideration आप वहाँ पर mention करोगे. Otherwise, you will simply claim on the basis of the bill of exchange, और वहाँ पे सिर्फ आप bill of exchange का mention करोगे. So that is what I infer from this example, but this is not a very fit example here. Okay. So the consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill. Consideration of a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill. मतलब plaintiff का ये कहना है कि he has promised me to give 2 lakh rupees on the basis of the promissory note and now he has refused. ठीक, तो इस ग्राउंड पर आप सूट कर रहे हो. तो कंसिडरेशन में दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, rather the other party refusing the money itself. So here you will talk only about the promissory note and not for the consideration as a substantive ground of claim. Now consideration is a substantive ground of claim is when there is a dispute regarding the consideration. Now he is saying that I will pay only 1 and you are claiming 2 because it is written 2 in the bill of exchange. तो वहाँ पर फिर जो bill of exchange में जो consideration amount है उसके dispute को आप mention करोगे that there is a dispute regarding the amount of the consideration. But otherwise if there is no dispute on the point of consideration, तब आप simply bill of exchange की चर्चा करोगे that कि bill of exchange is there, that is promissory note, and so amount is to be paid. In our example, bill of exchange is promissory note. ठीक. So next, every pleading shall be signed by the party and his pleader if any, provided that where a party pleading is by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. ठीक, तो पार्टी साइन करेगा और उसका लॉयर साइन करेगा. The pleading has to be signed by the party and his lawyer. ठीक, that everyone knows. जो आप plaint बनाओगे that will be signed you and your lawyer. Similarly, written statement you and your lawyer will sign. और अगर आप available नहीं हो because of illness or because of some other reason, then you may authorize some other agent to sign that pleading. अब मान लो pleading पर पार्टी का सिग्नेचर नहीं है. What will be the effect? Now suppose a plaint has been filed, but the plaint has not been signed by the party, neither his agent. What is the effect? Is it that incurable defect? बताइए. प्लेंट को अगर पार्टी ने या उसके एजेंट ने सिग्नेचर नहीं किया है, is that an incurable defect? The answer is no. That is not considered to be an incurable defect, क्योंकि उस प्लीडिंग्स पे बाद में भी आपसे सिग्नेचर लिया जा सकता है. ठीक, तो इसको आप लिख लो, राइट डाउन. द पार्टी और हिज एजेंट नॉट साइनिंग द प्लीडिंग इज नॉट एन incurable defect. Rather, the party may sign the pleading at any stage of the proceeding. At any stage of the proceedings. तो पार्टी ने साइन नहीं किया, गलती हो गई. The lawyer has signed, but the plaintiff has not signed. That can be signed at later stage. तो उससे ट्रायल के मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वकालतनामा तो साइन किया होगा उसने. So that is sufficient. ठीक. अब इसके बाद 14A. 14A इज बेसिकली कि पार्टी को अपना एड्रेस कोर्ट को बताना पड़ता है, कोर्ट में देना पड़ता है, क्योंकि जितने भी नोटिस आगे सर्व होंगे वो सब इस एड्रेस पर होंगे. अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति रहता है दिल्ली में, जो किराए पर रहता है, रेंट पर. अब ही में चेंज हिज एड्रेस. आज यहाँ पर है, 2 महीने बाद किसी और जगह रेंट पर ले लिया. अब दिल्ली में मान लो आप कोई जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट ऑफिस है, एक ही ऑफिस है, ब्रांच. अब मान लो आपके ऊपर किसी ने सिविल केस किया. अब कोर्ट रिक्वायर्स कि तुम अपना एड्रेस बताओ. अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस एड्रेस पर रह रहे हो वही एड्रेस बताओ.
आप कोई ऐसा एड्रेस बता सकते हो जहाँ पे कि कोई भी कोर्ट का नोटिस दिया जा सके, आपको कोई भी कोर्ट का नोटिस दिया जा सके। अब इफ यू गिव द एड्रेस ऑफ योर ऑफिस, दैट एड्रेस इज परमानेंट। अब आपने ये एड्रेस ऑफिस का कोर्ट में जमा कर दिया, तो दैट मीन्स नाउ यू वांट कि जब भी कोई नोटिस जाएगा आपके उस एड्रेस पे आए। तो द मोमेंट दैट नोटिस इज डिलीवर्ड टू दैट एड्रेस, द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट इट हैज बीन डिलीवर्ड टू यू। अब आपको मिला या नहीं मिला, दैट इज योर हेडेक, बिकॉज यू हैड गिवन द एड्रेस। If you have given the address, it is your headache to find out whether the notice is received by you or not. So basically one fixed address you have to give, and it means that you want all the notice be delivered at that address. So in that way the parties have to give the addresses to the court on which the party intend that in future you will receive the notices and summon। ठीक, अगर आप एड्रेस चेंज करते हो तो आपको इस बात का नोटिस कोर्ट को देना पड़ेगा दैट दिस इज माय न्यू एड्रेस, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने एड्रेस चेंज कर भी लिया तो उसी एड्रेस पे नोटिस आता रहेगा और ये माना जाएगा दैट यू हैव रिसीव्ड द नोटिस। सो इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कोर्ट दैट यू आर चेंजिंग द एड्रेस। सो दैट इज व्हाट ब्रॉडली दे आर टॉकिंग अबाउट। Every pleading when filed by a party shall be accompanied by a statement. Every pleading when filed by a party shall be accompanied by a statement in the prescribed form, signed as provided in Rule 14 regarding the address of the party. मतलब जब आप pleading फाइल करोगे साथ में अपना एड्रेस दोगे कोर्ट को एड्रेस बताओगे। What is that address? Address where you intend to receive the notice of the court. Such address may from time to time be changed by lodging in court a form duly filled up and stating the new address of the party and accompanied by a verified petition. तो जब भी आप एड्रेस चेंज करोगे you will inform the court a verified petition. अब जो सूट चल रहा है, सूट विल कंटिन्यू फॉर सेवरल ईयर्स। तो अब आपने अगर एड्रेस चेंज किया है तो आप कोर्ट को नया एड्रेस बताओगे। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप अपना ही एड्रेस दोगे, यू कैन गिव कोई ऐसा एड्रेस वेयर यू इंटेंड टू रिसीव द नोटिस। अब आपको अपना जेन्युइन एड्रेस तो देना ही पड़ेगा वैसे भी, बट फिर भी द प्लेस वेयर यू वांट टू रिसीव द नोटिस दैट एड्रेस मे बी डिफरेंट and that you have to file before the court. The address furnished in the statement made under sub-rule 1 shall be called the registered address of the party and shall until duly changed as aforesaid be deemed to be the address of the party for the purpose of service of all processes in the suit or in any appeal from any decree or order therein made and for the purpose of execution, and shall hold good, subject as aforesaid, for a period of 2 years after the final determination of the cause or matter. तो मतलब एक बार आपने एड्रेस डाल दिया तो ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द अपील, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, फॉर ऑल पर्पसेस, फॉर एनी नोटिस, दैट एड्रेस विल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी। और एक बार जब सूट खत्म हो गया तो उसके 2 साल बाद तक दैट एड्रेस विल बी वैलिड। देन सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस may be effected upon a party at his registered address in all respects as though such party resided thereat। तो मतलब माना जाएगा कि आप वहाँ रहते हो और जितने भी प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस मीन्स व्हाट, नोटिसेस, वहाँ पर आपको सर्व किया जाएगा। Where the registered address of a party is discovered by the court to be incomplete, false or fictitious, the court may either on its own motion or on the application of any party order. In the case where such registered address was furnished by a plaintiff, stay of the suit
or in the case where such registered address was furnished by a defendant, his defense be struck out and he be placed in the same position as if he had not put up any defense. ठीक, so that is important. ये क्या कह रहे हैं कि आपने अपना एड्रेस बताया और एड्रेस इनकम्प्लीट है या एड्रेस गलत है, कोई काल्पनिक एड्रेस बता दिया आपने। अब कोर्ट ने ट्रायल शुरू कर दिया, अब आपको नोटिस देना उस एड्रेस पे। अब जो प्रोसेस सर्वर है, he came and report to the court that the address is false. The process server who goes to deliver the notice, he declared to the court that the address which is given is false or fictitious, incomplete, etc. and therefore the notice could not be served. अब उस केस में if you are the plaintiff, the court will what? Stay the suit. अब जब तक आप एड्रेस सही नहीं लगाओगे सूट नहीं चलेगा। एंड इफ यू आर द डिफेंडेंट, द कोर्ट विल स्ट्राइक आउट द डिफेंस। व्हाट इज मीन बाय द स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द डिफेंस? जब मान लो डिफेंडेंट ने ट्रायल में अपने फेवर में 4 विटनेसेस प्रूव कर दिए, 4 एविडेंसेस प्रूव कर दिए और उसके पास स्ट्राइकिंग आउट ऑफ डिफेंस का ऑर्डर आ गया, तो जितने भी एविडेंसेस डिफेंडेंट ने अभी तक प्रूव किए हैं वो सारे के सारे ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएंगे और ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। So all those evidences which the defendant has proved till now, all those evidences will be taken off the record and those will not be considered as an evidence, and it will be deemed as if the defendant is not proved any of the evidence in his favor. This is what is called the striking out of the defense, and this is very harsh order. तो डिफेंडेंट ने जो डिफेंसेस लिए हैं उन फुल डिफेंसेस को हम स्ट्राइक आउट करते हैं एज इफ यू हैड नॉट गिवन एनी एविडेंस, एंड वंस द कोर्ट हैज पास्ड सच काइंड ऑफ ऑर्डर, either stay of the suit or striking out, then obviously the party concerned go to the court and file the proper address. So there is suit which stays, or if the defense is struck out in the sub-rule 5, the plaintiff or the defendant, as the case may be, may, after furnishing true address where a suit is stayed or a defense is struck out under sub-rule 5, the plaintiff, or as the case may be, the defendant may, after furnishing his true address, apply to the court for an order to set aside the order of stay, or as the case may be, the order striking out the defense. ठीक, तो देखिए जैसे ही आपका डिफेंस स्ट्राइक आउट होता है उसके खिलाफ आप रिवीजन में भी जा सकते हो, अपील नहीं करोगे। whenever the defense of the defendant is struck out, he can go in revision against that and not in appeal. ठीक, the court if satisfied that the party was prevented by any sufficient cause from filing the true address at the proper time, the court, if satisfied that the party was prevented by any sufficient cause from filing the true address at the proper time, shall set aside the order of stay or order striking out the defense on such terms as to costs or otherwise. And then after that, the court will proceed with the proceedings as it thinks it, and shall appoint a day for proceedings with the suit or defense as the case may be. And then nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of a process at any other address if for any reason it thinks fit to do so. जब आपने जो रजिस्टर्ड एड्रेस आपने जो लगाया है, अब कोर्ट की मर्जी है कि वो चाहे तो किसी और एड्रेस पर जो आपका एक्चुअल एड्रेस है वहाँ भी नोटिस सर्व करा सकता है. सो दैट डिस्क्रिप्शन द कोर्ट हैज. ठीक, 15 we had read already. 15 तो पढ़ लिया, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, फर्निशिंग ऑफ एफिडेविट एक्सेट्रा 15 में पढ़ चुके हैं. 16 we have to read. 16 में आप एक केस लिख लो
केस का नाम लिखवा देता हूँ, दैट इज इंग्लिश केस नाउल्स वर्सेस रॉबर्ट्स, जजमेंट डिलीवर्ड बाय बोवन लॉर्ड जस्टिस 1888. Now this judgment is obviously not on Order-6 Rule 16, that is earlier judgment, but SI provision वहाँ भी है. See, the court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious. So unnecessary you understand, scandalous means what? Something which is misproportionate. अब मान लो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के बारे में, डिफेंडेंट के लिए एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट किया, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट किया और सूट करने में उसने प्लीड किया, बाकी प्लीडिंग तो ठीक थी बट एक प्लीडिंग किया, उसमें लिखा प्लेंटिफ ने दैट डिफेंडेंट इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर and he is committing the breach of contract in the past with the other people also. He has done the breach of contract with other people also. So he is using that kind of paragraph. So he uses or write that very strong paragraph against the defendant. So now this is not wanted to write such kind of thing. आपको सीधा लिखना चाहिए था कि आपको क्या राइट वायलेट किया और आपको क्या रिलीफ चाहिए वो लिखिए, और जबकि आप इस तरीके से लिखकर आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन में जा रहे हैं. सो दीज काइंड ऑफ प्लीडिंग्स आर अननेसेसरी स्कैंडलस, क्योंकि उसके कैरेक्टर से आपको यहाँ पर क्या करना है. अगर आपको प्रूव करना है बैड कैरेक्टर तो आपको देखना पड़ेगा कि उस बैड कैरेक्टर एविडेंस एक्ट में परमिसिबल है कि नहीं. अगर आपको प्रूव करना है तो ट्रायल के समय आप उसको प्रूव कर लीजिए, बट इन प्लीडिंग्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू डोंट रिक्वायर्ड टू प्रूव द बैड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन by making this kind of scandalous and unnecessary kind of statements, pleadings. ठीक, the court may at any stage of the proceedings order to struck out or amend any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous. Frivolous means छोटी मोटी बात है, और vexatious. Vexatious मतलब परेशान करने वाली बात है. To trouble the other party, to make him trouble. To vex means to trouble. Frivolous means senseless, false thing. Scandalous means किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, unnecessarily बढ़ा चढ़ाकर बोलना, और disproportionately बोलना मतलब जितना कि उस केस में जरूरत है, उस बात की उस केस में जरूरत है, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपने बोला. For example, that this man is a bad person of bad character is not required to be pleaded because that is a matter of evidences. And then which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit, and then which is otherwise an abuse of the process of the court. ठीक, अब you see the peculiarity of Order-6 Rule 16 is कि यहाँ पर पार्टी अमेंडमेंट का एप्लीकेशन नहीं डालता है. That is the main point that the court has stated कि Order-6 Rule 16 में 16 और 17 में क्या फर्क है. 17 में मैं पहले प्लीडिंग कर चुका हूँ और मुझे अपनी प्लीडिंग को अमेंड करना है, तो 617 में आप एप्लीकेशन डालोगे. और 616 में क्या है कि मैं अपनी प्लीडिंग को अमेंड नहीं कर रहा, जबकि मेरी प्लीडिंग को अपोजिट पार्टी एप्लीकेशन पर या कोर्ट सुओ मोटो स्ट्राइक आउट कर रहा है. Means it is a compulsory kind of amendment. Now you understand 616. Suppose two persons are into the suit, they make their pleadings. Two person A and B are in the suit, they make their pleadings. The court strike out some pleading, not all. Now he has not voluntarily struck out. कोर्ट ने 616 में ऑर्डर किया कि ये प्लीडिंग हटाओ because that is scandalous. So this is basically involuntary. This is basically an involuntary amendment of pleading, either upon the application of the other party, or suo motu by the court, and the pleading of the other party is struck out.
and that is what the court in this case talk about. तो इसको लिख लीजिए, write down, right? It was held that striking out of pleadings is an involuntary amendment of pleadings, wherein the court either suo motu or upon the application of the party strikes out the pleadings of the opposite party. It is against the wishes of the opposite party. जबकि 617 में क्या होता है, you yourself are amending the pleadings, और जबकि यहाँ पर आपने अपने प्लीडिंग्स तो लिख दिए, आपके प्लीडिंग्स आपने लिख दिए, और अपोजिट पार्टी के एप्लीकेशन पे कोर्ट सुओ मोटो, या तो अपोजिट पार्टी के एप्लीकेशन पे या कोर्ट सुओ मोटो आपके प्लीडिंग्स को अमेंड कर रहा है. सो दैट इज फोर्सफुल अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मीन्स व्हाट? स्ट्राइकिंग आउट हियर. जबकि 617 में द पार्टी हिमसेल्फ अमेंड द प्लीडिंग्स, दैट इज वॉलंटरली अमेंडमेंट. इसमें आगे लिखिए, It was also held that such provisions shall be used sparingly. Sparingly मतलब rarely. sparingly. Rarely. Sparingly means rarely. और इसमें एक और पॉइंट है, ये कोर्ट जो स्ट्राइकिंग आउट करेगा, आप याद करो जब प्लीडिंग्स देते हैं तो उसमें एक तो होता है प्लीडिंग और एक होता है उसका एफिडेविट. वन इज प्लीडिंग एंड अदर इज एफिडेविट. अब जो प्लीडिंग है उसका तो स्ट्राइकिंग आउट कोर्ट कर देगा 616 में, लेकिन अगर एफिडेविट में भी वही बात आपने लिख रखी है तो 616 डज नॉट अप्लाई अपॉन एफिडेविट्स. तो एफिडेविट में अगर स्ट्राइकिंग आउट करना है तो उसमें द कोर्ट विल यूज सेक्शन 151. तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, राइट. द स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स फ्रॉम द मेन प्लीडिंग of party can be done by the court under Order 6 Rule 16, but any pleading to be struck out from the affidavit is not permitted by Order 6 Rule 16. Rather, it can be done under Section 151 inherent powers. ठीक. So that's all for this topic and this lecture also. In next lecture we would start with Order 8. Thank you for watching.